जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और अभी मैं गुफ्तगू में होऊंगा एक बहुत ही प्रोमिनेंट मणिपुरी मुस्लिम जिनको पंगाल बोलते हैं, who is also from the Meitei community of Manipur. The Pangals are from the Manipuri Muslims, right? So we have the official spokesperson from the UMPC. UMPC is United Manipur Pangal Committee. उनके spokesperson है, वो आके हमको बताएंगे. We all heard about the incident yesterday where there was violence in Manipur once again, and so he will tell us some details and his way forward to bringing in peace in a beautiful state like Manipur with beautiful people. Let us welcome him. Rais Bhai, Adab and Jai Hind, and thank you very much for taking your time, Rais Bhai. Adab, Jai Hind, sir, and thank you so much for having me here, first of all. And yeah, it is again a really unfortunate part from our side because when there would be some kind of like achievement, some kind of big achievement, I would be really happy to share on that particular situation. But unfortunately, since last 3rd of May 2023, I can say last year, so it's been almost 8 months completed, I can say. Yeah, and that is happening, and we are also the same, what to say, victim like others, because we are also the sufferer. We are also the same problem which is happening. So all the business, all the common, what to say, like everything is balanced. So as far as yesterday's incident is concerned, ये क्या हुआ कि ऐसा है कि यहाँ पे मणिपुर में बहुत सारे चीज चल रहा है. आपको तो पता है, आपने यहाँ पे पोस्टिंग में मतलब कुछ साल गुजारा है, तो यहाँ का एक माहौल है. मतलब बॉर्डर स्टेट होने के नाते यहाँ पे बहुत सारे चीज नंबर 2 बोलते हैं. यहाँ पे नंबर 2 का बिजनेस बहुत सारे चलते हैं. They are considered as illegal and human trafficking, I can say, because वो बहुत सारे चीज जैसे कि ड्रग्स और ड्रग्स के बारे में बहुत फेमस है. So a kind of like our community is also kind of like victimized in that particular situation, because we don't have that much of jobs opportunity in the state. And when it comes to our community, we have only 8.4% in the state as per 2011 census. But हम लोग वहाँ पे उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो फिर एक सीधे तरीके से तो थोड़ा सा टेढ़ा वाला, तो किसी से अलाइन कर दिया, वहां से बहुत सारे पैसे मिल गए. मतलब एक अपॉर्चुनिटी, एक परसेप्शन है लोगों के बीच में. तो ये जो चीज है, उसी की वजह से हमारी खुद की कम्युनिटी में बहुत सारे, मतलब अभी जो कल के इंसिडेंट है इज अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ लाइक इंसिडेंट. तो एक ड्रग का वो लोग बोल रहा है, मगर फैमिली कंप्लीटली डिनाइड इट. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फैमिली ने डिनाई किया है कि कल का क्या हुआ है कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप है आरपीएफ, उसी ने प्रेस रिलीज किया है कि वो बंदा जो है, जो फैमिली का बंदा जो है, MD Hassan, was really involved in drug mafia since long time, and we warned them like anything since long time, but we are not able to capture him. We are not able to like they call him, but he is not agree. वो उसके पास आकर के बात नहीं कर रहे थे. तो ये बहुत सारे चीज चल रहे थे. तो अचानक से कल 4 जिप्सी में कुछ 25 से 30 लोग आकर के फैमिली में आक्रमण किया. उसी टाइम वाइफ is Naga. Wife is from Naga. Now she is obviously Muslim, and उसकी बच्चे के साथ वो खाना खाने की तैयारी में थे. उस टाइम एक्चुअली हासन उसकी वाइफ के हिसाब से वो घर पे तो था, मगर कहाँ पे गया है उसको पता नहीं. तो वो लोग forcefully entered the house and ransacked everything and try to like threaten and beaten blue and black. एंड उसके बाद वाइफ ने चिल्लाया कि हमको बचाओ, ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है, चोर आ गए, व्हाटएवर सिचुएशन. सीसीटीवी भी अभी फुटेज अभी रिलीज किया है. तो वो लोग को बचाने की आपने वो फुटेज देखा है, सीसीटीवी का फुटेज? हाँ, फुटेज देखा है. अच्छा. उसमें
जैसे कि कैमोफ्लेज, बहुत सारे चीज है, मतलब मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा। तो वो जो चीज है, बहुत सारी चीज निकल के आ गए है। उसके बाद उसकी फैमिली की आवाज की वजह से जो मतलब neighbors are gathering like anything, and some of them are coming back from their works to their home। तो उसमें अचानक से वो लोग ने डायरेक्टली गन फायर कर दिया उसमें, on the spot 4 of them killed, murder, and then 14 of them critically injured. Some of them are critically injured, and like they are hospitalized right now. And Alhamdulillah, with all the graces of our effort and everything last night, this was really ऐसा होने वाला था कि communal classes between Meiteis and Pangals. But fortunately, all the leaders of Meiteis, all the leaders of MLAs, even the Honorable Chief Minister of Manipur came out and calm down the situation। ऐसा हो गया था। और सिचुएशन उसके बाद सिचुएशन हम लोग ने सेटल किया, मतलब अराउंड 2 AM इन द लाइक नाइट। तो उसके बाद अभी आज हम लोग का मीटिंग हुआ है, जो बहुत सारे चीज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक का मीटिंग हुआ है। उसमें हम लोग ने चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया। और उसके बाद जो कुछ डिमांड हम लोग ने रखा है वही हो रहा है। मगर हमको इसी में फॉर्चुनेटली दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इज नॉट बीइंग colored as communal violence. That is a kind of like targeted, but they also the militant group in like knowingly mentioned like they are kind of like feel sorry, but we are under investigation and we will come out with the facts. And the family is, for your kind information, family is rejecting, denying like anything when they call themselves as a drug what to say, trafficker or drug dealer, whatever it be. This is like really sad, but you know what? I am quite relieved to hear that what you have said it ke communal घटना होने से बच गई वो घटना, because a lot of leaders they met together, they took immediate action. Like in 1993, there was a very infamous Meitei Pangal clash. It was a very deadly clash, in fact, that had taken place. So वैसी घटना होने से बच गई. This is not a communal but an ethnic problem that's going on in Manipur. Along with, am I right in understanding this? Correct me, Raees भाई, कि मणिपुर में एथनिक प्रॉब्लम है ऑलरेडी, ठीक है? अब उस पे ये घटना वो है जो कि कम्युनल बात नहीं थी. इट्स नॉट बिकॉज दे वर मुस्लिम सो दे वर टारगेटेड, इट्स बिकॉज इट वाज एन एथनिक जो हादसा हुआ. तो इसको कम्युनल कलर या कम्युनल फ्लेवर वी शुड नॉट गिव. एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग दिस? yes because हमने ऐसा क्रेडिबिलिटी ऐसा बता दिया, तो फिर जो जितने भी बहुत सारे आज की तारीख में मैं बता सकता हूँ, आई कैन से प्राउडली टू एंटायर कंट्री और एंटायर वर्ल्ड दैट no one like other community like Meitei CS was come out like yesterday before. ऐसा कभी नहीं हुआ है. हमारे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है. लास्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एक ड्राइवर को उसी की मतलब वो लोग के गाय लेने के लिए, वही मतलब वो हिंदू का मितई का ही लड़की है और कुकी से शादी की, तो उसके चक्कर में एक मितई पांगल अपना जो मुसलमान मारा गया. तो उसी में भी ऐसे ही नहीं हुआ, मतलब बाहर आया. मगर कल each and everyone you may be heard about like Kokomi, you may be heard about like Fox, you may be heard about like so many credibility like credible civil society organization, they came out and support like anything for us. So we cannot like claim that incident was really a communal violence. So that is really not. That is a completely law and order issue, I can say rather, because वहां पे कैसे जिप्सी 4 जिप्सी कैसे घुस के आया वहां पे, वो वहां पे कहीं रास्ते पे तो आए होंगे, उसमें पेट्रोलिंग तो करना रहेगा. वहां की कंसर्न एसपी क्या कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल, जो भी बहुत सारे सवाल आ जाता है ना उसमें. तो मगर इसमें वो नहीं है. राइट.
So basically, I was in conversation with Brigadier John this morning, जो वहाँ पे डेप्यूटी जीओसी वहाँ के डिवीजन के मणिपुर में रह चुके हैं. उन्होंने भी यही बात करी है. उन्होंने बोला कि इसको कम्युनल एंगल से नहीं देखा जाए. ये कम्युनल क्लैश नहीं है. It's again, it's as you have rightly said. He also was on the same page, and we were together just now on a show just now with Barkha Dutt. Just now अभी हम लाइव बात कर रहे थे. आपने भी यही बात वहाँ पे कही है. तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि अबाउट दिस क्लैश के इसको कैसे, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो इसको who will jump up the guns, who will fire the trigger कि भाई कम्युनल क्लैश है ये. They will make it Hindu versus Muslims. So I want you to, with your maturity, make them understand कि ऐसा नहीं है कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है ये घटना. अगर कोई इनको समझाएगा ऐसा तो उनको आप थोड़ा समझाएंगे प्लीज भाई. एक्चुअली यहाँ पे क्या चल रहा है कि हमारी कम्युनिटी का जो अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ लाइक इवन बरखा दैट व्हेन शी इंट्रोड्यूस to all of you and to the like her audience, like उसमें क्या है कि only Muslim-Meitei Pangal guy can drive to the cookie area. हाँ, उसने right. कहा था ये उसने कहा था. उसका मतलब ये है कि we are the only community can go and access some part of like our cookie brothers and some like we are completely based in, as you know that we are based in valley. So इसमें एक क्या बोलते हैं एक what to say एक शक की नजर में देखने के एक वो हो जाता है हमारे ऊपर. So we are not that kind of like in the history of Manipur since our exists हम लोग का we have around like 500 plus years of our history in the state. हम कैसे आए हैं, कहाँ से कैसे जुड़ गए, जितने भी हिस्ट्री का एक एक पन्ने में हमारे खुद का कुछ न कुछ तो है मणिपुर में, मुस्लिम का, मीतई पांगल का. हम कभी 1972 हाँ तो 1972 में हमारे खुद यस ही हिमसेल्फ इज दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. अभी लिलोंग जो अभी इंसिडेंट हो रहा है वहां का है. उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो जो अभी मणिपुर की वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइक मेडिकल कॉलेज रिम्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, इवन मणिपुर यूनिवर्सिटी इज बिकॉज ऑफ हिम. सो मेनी क्रेडिबिलिटी वर्क्स, डेवलपमेंटल वर्क्स आर देयर. सो ये जो चल रहा है हमारे ऊपर, हम माइनॉरिटी, हमको कुछ ना कुछ इनजस्टिस मिलेंगे ही मिलेंगे. दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर कम्युनिटीज. बट हमको, हमारी कम्युनिटी को हम ये समझाने की कोशिश में है कि we should not involve such a work like drugs, for example. ड्रग्स के मामले में हम उसी पे चले गए तो फिर हम उसी पे फंस जाते हैं. तो हमारे ऊपर जब आ जाता है तो फिर हम कोई नहीं बचा सकता. जैसे कि लास्ट नाइट का इंसिडेंट, उसी में बेचारे 4 लोगों का कुछ उसमें कुछ नहीं हुआ है, उसी के खुद की भाई मार दिया गया है और 3 लोग अदर लोग मार दिया गया है और किसी का तो मतलब पूरा हाथ टूट गया है बिकॉज ऑफ दैट गन फायर. तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है. वो लोग को लेना भी नहीं देना भी नहीं वो इंसिडेंट से. ना ड्रग डीलर है ना ड्रग यूजर है, दे आर जस्ट इनोसेंट पीपल. बट ऐसे सिचुएशन में हर चीज में तो फिर ये जो ड्रग्स के मामले में ये जो एक क्या बोलते हैं, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि नंबर 2 के जितने भी बिजनेस में हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, भले कि हम थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर पड़े. We should work hard like anything. We should get first of all a quality education. There is the issues because as far as हम लोग खुद खड़े हो करके कुछ हम जिंदगी के कुछ बनना चाह रहे हैं तो फिर हमको क्वालिटी एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वो जरूरी है, वो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मगर ये दूसरे तरीके से नहीं, कभी नहीं होना चाहिए. ये हमारी पर्सपेक्टिव है. यूनाइटेड मीतई पांगल कमिटी मणिपुर, वो उसी की हम लोग का एक ये एक अम्ब्रेला ग्रुप है. उस हम लोग ने रिसेंटली ये इस इशू की वजह से हम लोग ने मिल करके फॉर्म किया है. राइट. आप हल्का सा मेरे को यूएमपीसी के बारे में भी बताएंगे क्या, जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया, यूनाइटेड मणिपुर पंगाल कम्युनिटी. ये कितने मेंबर हैं और कैसे फॉर्म हुई, कब फॉर्म हुई, उसके बारे में आप थोड़ा can throw some light. Okay, as you know that you are already experienced so many things about like Manipur. मणिपुर में बहुत सारी चीज
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे बहुत सारे चीज चलता है। मगर मणिपुर में ऐसा चीज आ गया था कि May 3 के बाद हम क्या करें, हम किसकी तरफ खड़े हो जाएं और किसकी तरफ क्या करें। हम मतलब एक बहुत कंफ्यूज में थे। हम हेल्प कर रहे थे मतलब कुछ विक्टिम्स को, मतलब रिलीफ कैंप में खाना पीना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीज हमको जो हमसे हो सके। बिना देखे कि वो हाँ, कुकी है विक्टिम कि माइते हैं, as long as they are कुकी victims. ना, मैक्सिमम टू मीतेइस। आई डोंट थिंक कुकीज को हमने कभी, क्योंकि हमारी एरिया में भी नहीं आती वो चीज एक्चुअली अच्छा, देखा जाए, जो victims हैं, आपने खुद पता है। हाँ, तो वहां पे कोशिश की, मगर हम जितने भी हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर वर्किंग लाइक स्टेट लेवल वाला, लोकल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बहुत सारे लोग एक इकट्ठे होकर के एक वॉइस होना चाहिए। रईस का एक आवाज और एक अब्दुल का एक आवाज, कयूम का एक आवाज, एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में हम ऐसा बन सके कि दोनों का जो भी है, क्योंकि हमारी खुद का यहाँ की रिस्पॉन्सिबल एक रॉयल महाराजा who is also the Rajya Sabha member once said like Muslim-Meitei, Pangal and Naga should stand and try to reconcile the situation rather to like sit idle. तो वो उसमें एक ट्रिगर भी आ गया। तो हम लोग in the month of July 8 we sit together with all the ulemas bodies like Jamiatul Ulema, we have Anjuman, we have so many groups, we have all types of like organization gather a place. That is also at the Lilong, and we decided to form like a common platform where everyone can be a part of that, because there may be ideological differences हो जाता है, ये कर वो, मतलब बहुत सारे चीज, मगर ये कॉमन इशू के लिए हम लोग एक कॉमन 23 ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन दिस यूनाइटेड मीटिंग पैनल कमिटी। और हम लोग ने फाइनली ये जो नाम है दैट 16 जुलाई इटसेल्फ हम फाइनलाइज किया है, और पब्लिकली हम लोग ने अनाउंस किया है 18 जुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद हम रिलीफ कैंप में हेल्प करना, ये करना, उसकी वजह से हम वो नहीं किया, हमने थोड़ा सा अलग किया है। दिल्ली 5 तारीख को हम अगस्त की 15 अगस्त को हम दिल्ली गए। वहां पे हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, माइनॉरिटी कमीशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी कमीशन को किया, और हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और वहां पे हमारी जितने भी मणिपुरी वहां पे PhD करके रहते हैं, कुछ एजुकेशनिस्ट है, कुछ मतलब सोशल एक्टिविस्ट है, वो लोग को सबको मिला करके 2 दिन का हम लोग ने एक आइडियाज ऑफ मणिपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम लोग ने एक सेमिनार टाइप, मतलब वो अलायंस करके किया। बहुत सारे चीज हमने कोशिश की। उसके बाद वापस आकर के हम गवर्नर से मिले, तो गवर्नर को हमने मेमोरेंडम फिर से सबमिट किया। एंड अभी तक जितने भी मणिपुर में जितने भी इश्यूज हो रहा है, हम वी आर ट्राइंग टू अलाइन विद एंड वी आर ट्राइंग टू एंगेज एंड ट्राइंग टू एटलीस्ट गिव सम हिल्स टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। वही हो रहा है सर। आप मेरे को ये बताइए राइस भाई, व्हाट वाज द नीड यू फाउंड फॉर दिस कमिटी टू बी फॉर्म्ड? एंड हालांकि इट्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि आपने अभी जो बताया जैसे कि वो अभी फॉर्म हुई है, राइट? इट वाज फॉर्म्ड अभी लाइक लास्ट ईयर, दैट मींस अ फ्यू मंथ्स बैक, तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ होगा। हाँ, तो व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? नहीं, जुलाई में तो कैसे। हाँ, तो आपको वो जरूरत क्या महसूस हुई कि ये ऑर्गेनाइजेशन UMPC फॉर्म होनी चाहिए? मैं बस समझना चाह रहा हूं मैं ये बात आपसे। एक्चुअली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो मणिपुर में मोस्टली क्या है कि रिलीजियस का एक बॉडी रहता है। There is the we consider as the highest like rank in the what to say society के लिए बॉडी में बहुत सारे highest, वो भी साथ में आ जाए सबसे पहली बार। तो Maulanas are coming together, and one Maulana himself is the convener of our organization. So that is the great part of our like they are they involve। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कभी सोशल इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं करते, वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व करते हैं, मगर इन जनरल
their instinct is not allow them to like be part of like this political or social activism kind of like situation. तो वो लोग भी come together हो गया. और बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि कुछ आइडियोलॉजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, लाइक दे आर मुस्लिम्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दे आर Meitei Pangals, but when it comes to ideological fight, they are different, but they are also coming together. Even I have some my ideas of Manipur is completely different from other like colleagues, but they are coming together for a cause. So that is really delivering the purpose of forming this organization called United Meitei Pangal Committee Manipur, sir. Okay. And and the people are recognizing like anything, and we are trying to engage, and we are the only I think I can say some of organizations, they are really doing great job. I don't want to mention, but UMPC Manipur almost met all the civil society organizations of major community Meiteis. But unfortunately, in this juncture, we are not able to go to the cookie areas, and some of the we are not able to meet them. However, most of the valley base, like we have Federation of Civil Society Organization, civil societies, then Kokomis, then we have Amuko, All Manipur United Club organizations. This kind of like organization, we already met them, and sitting with them and brief about what is the purpose of UMPC Manipur, and they are also really supporting like anything on our part. Right. Okay. मैं अब समझ में आ रहा है मेरे को. मेरा ऐसा मानना है, being a Muslim myself, and I say that तासुब जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन, वो ह्यूमन नेचर के अंदर एम्बेडेड है तकरीबन, ठीक है. और तासुब जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो किसके साथ होगा? माइनॉरिटीज के साथ. मैं नहीं मानता कि मैं बोलूंगा जो कमजोर है, और कमजोर हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में ओवरऑल एजुकेशन, तालीम की कमी है. क्योंकि तालीम की कमी है तो नौकरियां अच्छी नहीं मिलती हैं, तो आप अच्छी तालीम अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना आप मुश्किल तो दे पाते हो. तो ऑल इट्स अ विशियस सर्कल. लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स, एंड वंस अगेन सो पॉवर्टी, तो गरीबी आती है. So that is what आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं रईस भाई? Actually, that is my forte, I can say, because I'm also running a school called Manipur Creative School here in Imphal since 2017. Actually, I was working there in Pune for the last 14 years with different corporate companies. मैं क्या सोचा है कि वहाँ पे बहुत सारे नेटवर्किंग्स, आपने भी सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, AMP. मैंने पुणे से फ्रॉम फर्गुसन कॉलेज. आई वाज मिस्टर पुणे टैलेंट. फर्गुसन कॉलेज, माशाल्लाह. फर्गुसन. I completed my masters in Anjuman Khairul Islam Pune College. Okay, all right. That's very nice. इनामदार साहब को जानते होंगे आप? इनामदार पर्सनली जानता हूँ. I personally met them recently. हाँ, 2022 में मैं जा करके, वो लोग का यूनिवर्सिटी बन गया अभी. आजम कैंपस इज कंप्लीटली नाउ प्राइवेट. बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बहुत ज्यादा वो लोग से सीखना चाहिए. तो फिर आई वाज थिंकिंग लाइक मणिपुर में भी ऐसा मॉडल हो जाए. Everyone is working on education, but when it comes to quality education, they are not. So हमने यहाँ पे आकर के कुछ इनिशिएटिव किया है. I have a lot many challenges, sir, but I'm trying my best to give all possible way. Have you ever heard about Rahmani 30? Have you ever heard about Rahmani 30? That, yeah, I'm the coordinator since last 12 years. And because of my initiative, alhamdulillah, with all the graces of Almighty Allah, so far we have 26 MBBS government seat. That is also like consecutive 3 years we have state toppers. So that is really so that kind of results we are giving, and I'm also aligning with all possible way of educational edupreneurs, I can say, in my word. And education is the only way for us as a minority, because we should get a quality education.
Not said it. education, quality education. You said it. You said it. My Mm. father, he was the deputy chief of the army, and then he was the vice chancellor of the Aligarh Muslim University for 5 years. I know So, that. I know that. I know. जी. So he always believes that education is the way forward. अभी उन्होंने सर सैयद अहमद स्कूल शुरू करे हैं, and they're doing very well. In fact, they took the former Lieutenant Governor of Delhi, Najib Jung, to one of the schools, and he said the children in school are speaking better English than an English medium school. ये उनके अल्फाज थे. So you are right. To strengthen any community is education the right way with proper quality education, ताकि they can have a standing in society, ताकि वही लोग IAS, IPS जाएं, IIT, IIM जाएं, entrepreneurs बने, अच्छा करें, तरक्की करें. When if poverty is looked after, you are looked after, so automatically a lot of ills, lot of things get over. Anyway, इसके बारे में हम बहुत ओके ओके उसमें 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 एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा. I think you must be knowing about like Institute of National Importance, INI, Institute of National Importance. We have like 163 till November last year. वहाँ पे unfortunately we have 14% of our population, the whole country. In Manipur we have 8%. We are not able to get a 3% from that whole perspective. That 58% of whole budget of education is based on like IIMs, IITs, and some of the reputed universities of India. They are considered as Institute of National Importance. We are not able to enter in that category. So that is really unfortunate part, sir. Oh, yes, very, very unfortunate. So, I mean, so एक चीज और मैंने सीखी है, even as a defense analyst, when I speak on television on defense matters, मेरे जो mentors, जो उस्ताद रह चुके हैं, like my father's younger brother, Nasir Saab, Mr. Nasiruddin Shah, he always taught craft may should be better than the best. When you are unstoppable, unbeatable, and you are actually the best, अगर दो लोग हैं करके, you have to be higher than the other person. Then only he will ask for you by name. और ऐसे ही होता है. तो बिल्कुल. रईस भाई, आपसे गुफ्तगू करके बहुत ही बेहद अच्छा लगा, और आप you've thrown some very, very good light. And I know, I presume you are busy and you have to go, but before we let you go, any last message you would like to throw to the universe for the entire, not just Manipur, not just India, but for the entire universe as such? Okay, the problem, there will be lot many problems when it comes to myself, MajMd, Ahamed, Tampak, and sir, you yourself. Considering all the fact is like we need to understand the first of all what is actually going on with that particular scenario. For example, in India, I don't want to like stress on that particular political arena and all what is actually happening to us. But when it comes to us, we are not able to improvise ourselves because of so many things. That is really a very long kind of like situation. But in this juncture, we should always try to be a very good human being, one of the finest and human being. Then you will become an IS officer, you will become an army officer, you will become so many things. But first, a very good and fine human being, that is the essence and the very, what to say, ground baseline criteria. Without understanding, respecting other religion, respecting neighbors, and some other faiths. For example, we are the boss, we should be like that, we should no, please. If you respect others, then you will definitely get the same respect from others. So that kind of like yeah, this base human being. So that kind of like innovative ideas to be implemented all across the country, all across the world, so that we will live together, we will happily in this world. Now we are very short, kind of like 60 years on an average, max to max 80 years of our life. So that's it. You are absolutely right. And I would say जब मैं फौज में था, I've never felt discriminated ever. I mean, be it in Fauj, be it in corporate, be it ever, because I have fought counterinsurgency in Jammu Kashmir.
आई हैव बीन इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. हमेशा मेरे को मोहब्बत मिली है. सर शुक्रिया बहुत बहुत रईस भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू में. जय हिंद रईस भाई. मैं भी बहुत अच्छा लगा. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. नाइस टू टॉक टू यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड, सर. थैंक यू. Thank you so much. Thank you.